सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का यह वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट टाइम पे हम लोग इस पिक्चर को ड्रॉ कर रहे थे। ये पिक्चर एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसका नाम है जिंदाया, जिसकी हम लोग यहाँ पे फोटो यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसका एक आउटलाइन हम लोग इस पेज पर क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए, लास्ट टाइम का जो हमारा वीडियो था, अगर आपने देखा होगा, इस वीडियो में हमने क्या किया था, इसके जो आईज का पोर्शन है इसको अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था। यहाँ पे कुछ अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम बाकी है, जैसे इसके आईलाइसिस हमने लेफ्ट आई के कंप्लीट कर लिए थे। अभी जो राइट आई है इसका भी आईलाइसिस हम लोग यहाँ सामने अभी कंप्लीट करेंगे। फिर बाकी का पूरा प्रोसेस जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होगी। तो उसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कैमलिन का 0.7 mm जो हमारा पेंसिल है, ग्रेफाइट पेंसिल, इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और ये शार्प एरियाज पे ही इस्तेमाल होगा। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये इरेजर पेंसिल है जो कि प्रोफेशनल आर्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज हमारा ये हेयर ड्रॉ होगा, तो इसमें पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जब हम स्मर्च करके इसको डार्क करेंगे, लास्ट में इसमें हमें कुछ पार्ट्स को यहाँ पे इरेज करना पड़ता है और उसको एक शेप यहाँ पे हमको लाना होता है। तो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट करने के लिए हम लोग इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ यहाँ पे चारकोल का स्मर्जर ब्रश, जिसका भी इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और ये काम करेगा कब, जब उसको हम लोग को इक्वल प्रोपोर्शन में स्प्रेड करना होगा। फिर साथ ही साथ ये हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प पेपर, ब्लेंडिंग स्टम्प पेपर का भी इस्तेमाल आपको स्मर्च करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आइज हो गया। आइज में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसको हमने स्मर्च किया है सबसे पहले। फिर उस पर हम लोग क्या किए हैं, उसके ऊपर फिर से एक नया लेयर ऐड किया है और उसके आइज को हम लोग धीरे धीरे लेयर बाय लेयर डार्क कर रहे हैं। तो ये रहा ब्लेंडिंग स्टम्प। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो आप लोग ये ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ चारकोल है, ये यूज़ करने वाले हैं छोटा सा चीज़। हम लोग यहाँ पे इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ देखिए, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे इसके फेस को। ये सेकंड आई का पोर्शन है जिसको हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके जो आईज हैं यहाँ पे जो डार्क जो यहाँ पे टोन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे लेयर के थ्रू यहाँ पे शुरू में पहले हल्का लेयर बनाते हैं, फिर उसमें लेयर अभी यहाँ पे क्या हो गया, फेड हो गया। और इसको थोड़ा सा ओवर राइट करना है, सेम इसलिए हम स्मर्च करने वाले हैं अपने ब्लेंडिंग स्टम्प से। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो सिंपली। देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्मर्च करना है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं ग्रेफाइट का। ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हल्का डार्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इस टोन को थोड़ा सा डार्क करने वाले हैं, देखिए इस जगह पर, ठीक है। अब इस पोर्शन को हम फिर से यहाँ पे स्मर्च करेंगे, देखिए ऐसा। एक ही जगह पे अगर ज़्यादा आप स्मर्च करोगे तो वो पोर्शन जो है और भी ज़्यादा डार्क ऑप्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डेफिनेट का चारकोल ब्रश। इसकी मदद से हम ये जो पूरा आउटलाइन है, इसके अंदर में अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा तो वो यहाँ से हट जाता है। साथ ही साथ इसमें अगर जो टोन होगा, स्किन टोन, वो इजीली इक्वल चारों तरफ पर ये फैल जाएगा। देखिए, इसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल रहा है।
head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic if you wanna taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side. You would never see me coming. Stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side. You would never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential. Stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side. You would never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential.
face, they won't find a trace of you anywhere or any place. Oh,